Okay, students, very fine. Good evening to all of you. It remarks Chinmay sir's version that slow and steady wins the race. Opportunity makes a man successful, but opportunity knocks at the door only once. You are getting matric examination, that is only once. Your plus two first year will come only once. Opportunity will come only once, but you must have to fill this opportunity at certain type of operatic situation. That is through your endeavor, effort, and the feelings of your parents, how it can be hospitalized. तुमको जी अपॉर्चुनिटी दि जाऊँगी से बेटर वे यूटिलाइज कर यू वुड बी द ग्रेट वनकरर्स यू वुड बी द ग्रेट वेरियर्स बट चिन्मय सर टोल्ड दैट इज रियल एंड फैक्चुअल यू हैव द पोटेंशियलिटी मु मैक्सिमम इंस्टीट्यूट रे पढ़ाए मैक्सिमम कॉलेज चक भुवनेश्वर सिविल इंस्टीट्यूशंस पर्टिकुलरली टीचिंग फॉर आईएएस एंड ओएस बट तुम मान भितर मुझे देखुची किसी पिला मानकर एमती अफ्लुएंट अच्छी तुम सामने कहूँ से कथा नुहे तुम एबे सुधा कंपैक्ट नुह तुमको आहरी पढ़िया पड़ो तुम मान भर जो कोऑर्डिनेशन अच्छी बॉन्डेज अच्छी रिप्लीफाई करिया पड़ो देन देयर एवरीथिंग वुड बी ओके ओके स्टूडेंट्स विथ द सिंक्रोनाइजेशन वी विल मार्च टुवर्ड्स द फर्स्ट पोएम दैट इज रिलेटिंग टू स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग जेहेतु सार वर्तमान कहले जे एटा गोटे ओवरऑल तुमको कौन करेंगे केतबे प्रेजेंटेशन पे डका हबो मुही से प्रोसीजरटा पिला मानक पई अडॉप्ट करे किंतु एबे सुधा मु टिके आई एम एक्चुअली गेटिंग सर्टन टाइप ऑफ लैकिंग रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन तमरो भलो नॉलेज थाई पारे बट एक्सप्रेशन ऊपर मु टिके एबे सुधा ऑथेंटिक किछ पाइनी डाटा तेणु कर फिर भी ए चैप्टर सरला परे आमे स्टार्ट करबा रिलेटिंग टू प्रेजेंटेशन ओके स्टूडेंट्स समरी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग राइट डाउन लेख स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग टिके स्पीडी लेखिबो बेले अलगा किछ पढिबा समरी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग okay students write down stopping by woods on a snowy evening stopping by woods on a snowy evening clearly envisages envisages clearly envisages 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 the idea of a proper depiction depictions depictions of a rural life in a proper manner शुभम कोड रहिला को clearly envisages the idea of proper depictions of a rural life in a लिख दिया इन ए सेटा को चेंज कर दिया प्रॉपर आउ रिपीट करनी इन ए मैग्निफिसेंट वे MAGNI मैग्निफिसेंट वे here full stopper here poet here poet Robert Frost starts with
Robert Frost starts with an ordinary situation. An ordinary situation. And moves on towards a towards a philosophical speculation. Speculation. Speculation about man and nature. About man and nature. So far as so far as so far as so far as Frostian. Frostian. So far as Frostian. Dilemma. Dilemma. Dillema. Dilemma is concerned. Dilemma is concerned. The poet. The poet provides the relationship between natural creation and the potent of potent of human nature. The potent of human nature. The potent of human nature. Step पर पहले starting. Good paragraph पर separate. Like, once the poet rode rode to woods full stop. He guessed Guessed. He guessed that he knew whose woods it was. According to him, woods it was. It was WAS. According to the poet, the owner was living in a village. The owner was living in a village far away. Living in a village far away. Far away. AWAY full stop. He thought THOUGHT. He thought that he could enjoy the beauty of the woods, the beauty of the woods which was covered with snow. Next, what paragraph? Here,
In the poem, the horse represents utilitarian, 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 utilitarian aspects of life, utilitarian aspects of life. He judged everything. He judged everything in a prosaic manner, in a prosaic, prosaic, prosaic bracket लिखी दिया lack of imagination. Prosaic meaning lack of imagination. Prosaic matter of fact. In a prosaic matter of fact, FACT, full stop. He thought that it was dangerous. He thought that it was dangerous to stop there. It was dangerous to stop there in a far away place. To stop there in a far away place in a snowy evening. In a snowy evening. Next stanza. Next stage I would stanza अगर लिखा. The horse provided consciousness to the rider, and shook its harness bell, and shook, SHOOK, and shook its harness bell, harness spelling HARNESS, harness bell, to warn the poet, warn the poet that it was already late. So they should leave the place. Should leave, LEAVE. So they should leave the place as quick as possible. As quick as possible. Full stop. The place was lonely. And the only sound they heard, HEART, they heard, was that of the sweep, SWEEP, sweep of the wind. Sweep of the wind. Wind, WIND, wind. Full stop. Flakes of snow, flakes, FLAKES, flakes of snow
was falling, was falling, 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 and it was foolish, and it was foolish, it was foolish, Fwoliss, foolish, to come, to come to such a place, to come to such a place at that odd hour, at that odd hour, ODD, odd hour, HOUR. I would step here, please. But the woods are lovely, but the woods are lovely, lovely, dark and deep, but the woods are lovely, dark and deep, according to the poet, full stop. According to the poet, according to the poet, the beauty of the woods, the beauty of the woods was a challenge. The beauty of the woods was a challenge to his poetic, 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 poetic temperament, poetic temperament, temperament, full stop. Though it was, though, THOUGH, though it was lovely, it was lovely, comma, it was dark, it was dark and deep, deep, still then, full stopper, still then, STILL, still then, it's a beauty, it's a beauty, SHROUD, shrouded in mystery, 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 shrouded in mystery. Jar joda problem achi, you can repeat, students. I will dictate it again and again. Don't worry, because it is your first detection. Huh? Shrouded in mystery, MYSTERY, mystery. For an ordinary man, for an ordinary man, it is better to leave the place, it is better to leave the place, it is better to leave the place because he had many other, he had many other duties, to fulfill, listen to me, students. आम ये डिक्टेट कले खाली फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द समरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम एज वेल. पोएमटा जिते दिया जाए एक्चुअली स्टांजा वाइज दिया जाए आमको पोएटिक स्टाइल रे. तेणु आम गोटे ओभरऑल किसी आइडिया पाइबा. बर्तमान मु सब पिलांकर स्टैंडर्ड किसी जानी, तेणु जो पिला माने को रीड आउट कर जार किसी प्रोब्लेम है, जदि कॉम्प्लिकेटेड वर्ड थी सिंपल करदेवी, जदि कह कि सिंपल वर्ड है कॉम्प्लिकेटेड कर दिंतु. बर्तमान यहाँ कॉमन वे में डिक्टेट कली, तमें पढ़ घरे रीडिंग कर, फिर भी आपको आउ थे डिस्कसन एवं कर. जदि किसी रहा आउ टे चाहिए आनालिटिकल देखा मत कहले मु नोट भी प्रोवाइड करी.
विभिन्न भेराइटर नोट मो पाखे अच्छी 3-4 प्रकार नोट्स अच्छी रिलेटिंग टू दिस समरी तुम जो वे जी चाहिए से वे मुझे नोट्स दे पारि डोंट फियर भय कर किसी ना आम पाठ पढ़ुचे किसी भल रिजल्ट करवा ओभरऑल पूरा टोटली टॉपिक के तुम एनालाइज कर एनालिसिस कर यहाँ गोटे ऑर्डिनरी एनवायरनमेंट रो आम गोटे फैक्चुअल डाटा पाइचे दैट इज द ट्रांजिशन दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन and the way of expression is vital for almost all those who have actually selected yourself to learn English as your honor subject. You must have to use certain more actual tricks here एथि भी बहुत किसी बेले पढ़िबार अछि जेतेबेले आमे पर्टिकुलरली कहबा ए जो टॉपिक आमे पढुछु आपको कोन कुआ जाय पिले टॉपिक टा कोन कुआ जाय केते टाइम देखियो 35 आमे एटा कोन कहउछे इट इज रिलेटिंग टू literature. What is the meaning of literature? What is the meaning of literature? Literature a body of writing works. प्रत्येक जिनिस डेफिनेशन पचार जहाँ भी मन आइला घरे पाठ पढ़ुव कि गोटे देखिले नेचुरल सीनरी मत पचार सर माने कौन इंग्लीश एक्सप्रेस कर किंतु मुझे डिक्टेट कली किसी पिला टिके अबाग लगी कारण कौन ये आम फास्ट डिटेक्शन जितेबाला आमर किसी ओडिया मीडियम पिला अच्छा इंग्लीश मीडियम पिला अच्छा कि कमन नोट आम देले तेणुक तुम बेटर वे आपको सुपरविजन कर वर्ड मीनिंग गुड़ा आम डिक्टेट करें ना करना वर्ड मीनिंग दि जाए मुझे फिर भी वर्ड मीनिंग तुमको देदेवी वर्ड मीनिंग सहित एनालिटिकली कवर अप कर जार जो जिते प्रकार डाउट मत कहले भी मुझे कहीदे पारि वर्ड मीनिंग लेख वर्ड मीनिंग लेख वुड्स WOODS आउ जो पिला माने एब्सेंट थिलो पोएट्री पढ़ाला बेले जो पिला माने एब्सेंट थिलो पोएट्री पढ़ाला बेले जो दिन तुमर कॉलेज बंद थिबो से दिन 11टा बेल को मते कॉल करी पळे आसे मु आउथरे रिपीटेडली बुझाई दे जो माने पढ़ेला परे भी डाउट अछि बुझिना पढ़ेला परे जो माने डाउट अछि बुझिना सर मैं आउथरे बुझिबो टिके तुमको टाइम देबा को पड़िबो जो दिन छुट्टी दिन अछि किबा तुम कॉलेज रे जतबे क्लास नाही ता पूर्व मते टी रिंग अप कर दबो सर आपण जी कोचिंग एस्टेंड की नंबर किसी पिला मत इनफॉर्म कले आई विल रिपीट इट विदाउट एनी डिले आम आउथरे बुझाई दे पारे है पहले वुड्स हाइपेन दे लेख WOODS वुड्स हाइपेन दे लेख फॉरेस्ट नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वियर QUEER क्वियर QUEER queer hyphen de like strange then students farmhouse farmhouse hyphen de like rest house next students frozen 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 means state of freezing or coldness then students horse horse एटी रिप्रेजेंट करुचे कौन तमें कह आमे पिले तुमको कहल तुम जो पाठ पढ़ुच कि रास्ता घाट रे चलुच तुमको गोटे प्रकार थर्ड आई अच्छी दीटा आई आम देखुचे किंतु आमर गोटे थर्ड आई अच्छी कौ देवता तृतीय चक्षु अच्छी महादेव शिवंकर जोटा आमको प्रकृति में कौन करे तृतीय चक्षु आमको कॉन्शियसनेस कराए तुम रास्ता चलीच तुम कौन खाली बाँ पटे माड़ी माड़ी चलने तुमको एक्सीडेंट हेनी बाँ पटे भी तुमको कॉन्शियसली चलिया पड़े तेणु जो आम कह आम मन को आम बुद्धि को किए गोटे लगाम दौची तुम बर्तमान कुनी कुनी पिला अच्छा तुम माइंड बहुत डाइवर्ट हम विभिन्न प्रकार सांग मैंने डाइवर्ट करेंगे किंतु तुम मान भर गोटे लगाम किसी अच्छी है मुझे भूल बाटू गली मो बापा माँ शुणिले कौन भावे मो गुरुजन लोक शुणिले कौन भावे मु गोटे गर्ल चाइल्ड अच्छी कि गोटे बॉय अच्छी मुझे प्रकृति में ऑल ओडिशा लेवल किसी रिजल्ट कली मो बापा माँ प्राउडनेस आसो दैट इज मोरल कॉन्शियसनेस जदि मु कौन कली डिले कली नेग्लेक्ट कली मो पाठ पढ़ाटा इट विल डिमोरल माय फैमिली इट विल डिमोरल माय कैरियर इट विल डिमोरल माय कैरेक्टर हम ना नहीं प्रॉब्लम
तेणुक आमको कौन सी गोटे जिन चेतना अच्छी सचेतन कराऊँच जो सचेतनता आमको अलर्ट करे टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। सो ये जो हॉर्स रही यूटिलिटेरियन फीचर पिले कह तमें जाच गोटे फीस्ट की गल खावाई सफिसीयंट खाऊ बफे सिस्टम खाइल खाइल तुम मत गोटे विवेक जे मुझे एक्सेस खाइली एक्सेस नो एक्सक्यूज सब जिनसर बॉइलिंग पॉइंट अच्छी ना ना सब जिनसर लिमिट ना तेणुक तुमको गोटे किए कनसीयस कर दे राति कहीं खाऊ इनडाइजेशन प्रोब्लेम हम काली पुणी जाकि कलेरा वार्ड पड़ी गोटे प्रकार मोराल कनसीयसनेस आसूची ना नहीं सेमती मन रख हॉर्स ये प्रकृति में आम जब कनसीडर करवा आम लाइफ रे कौन घोड़ा प्रकृति चलाऊनी आमको आम तो आजिकल मेसिनारी जुग घोड़ा पीठ खाली बसीगले आम जंगल पाखे अटिक से कथा नुहे आम भी पिकनिक जाऊे फोर व्हीलर जाऊे बाइक रे जाऊे बुलिक रोचे ना नहीं कि से गोटे कनसीयसनेस आमको किए सचेतन कराऊँच दैट इज आवर कनसियस एटीट्यूड दैट इज आवर साइकोलॉजी ये ठीक नुहे ये भूल एते लेट करने कथा नुहे कारण इवनिंग पूर्व घरे पहुंचा दरकार ये बरफ झड़ हो पारे दरकार पड़े ये टेररिस्ट अटैक हो पारे बी कॉशियस एंड केयरफुल तेणु ये जो हॉर्स रही हॉर्स लेख मीनिंग सिंबल ऑफ यूटिलाइजेशन aspect of a life utilization or utilitarian aspect of a life जोड़ा लिखले चलिए utilitarian aspect of a life symbol of utilization or utilitarian aspect of a life then students harness bells HARNESS harness bells BELLS harness bells hyphen de lekha bells attached to the rein REIGN rein of animals next students sweep of easy wind sweep 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 of easy wind hyphen de lekha sound of the wind sound of the wind next students flake 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 lekha piece of a soft piece 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 of soft 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 comma light LIGST piece of soft 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 comma light and white snow then students downy flake downy 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 flake hyphen de lekha snow coming down being blown BEING snow coming down being blown by wind being blown by wind BEING being blown by wind last ande सुबुचे हां तापर लेख lovely hyphen de lekha attractive तापर लेख dark dangerous deep mysterious MYSTERIOUS mysterious
Okay students, completed. 1 minute dictate कले लिखिले सब हाँ आज रीडिंग करनब मु जानी तुम जिते डाउट बाहर मुझे बुझेगा जिते थर कह चैप्टर बुझेबी किंतु कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यही वर्ड को यूटिलाइज करी आमे केमती एक्सप्रेस करबा सार जोटा कहले गोटे प्रेजेंटेशन रहिबो क्लास प्रेजेंटेशन करिबो जदि भी किछि जति कॉम्प्लिकेटेड लागिला ए गुडाक मते काले के फोन भीतर कहले मु आउरी सिंपल वे रे आर स्टाइल चेंज कर देबी प्रत्येक भीतर जे तुम आज पढ़ केमती लगुची जदि चाहिए भीतर भी मुझे गोटे कौन करी आनोटेशन लिखिला स्टाइल रो पोएम को रिकम्पोज करदेवी आउरी बढ़िया हम क्या मुझे प्रथम जानी तुम मानकर किसी मत डाउट आसू ओके स्टूडेंट्स आम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ुचे लिटरेचर हाइफेन दे लेख लिटरेचर 10 मिनट लिटरेचर लिटरेचर स्पेलिंग कहबे लिटरेचर हाइफेन दे लेख ये बॉडी ऑफ राइटिंग वर्क्स ए बॉडी ऑफ राइटिंग वर्क्स सिंपलीफाई कर दूची आपको तो कहले यार डेफिनेशन आउर लेंथी हम तुमको जे एनीवे पचारे आज कौन क्लास है ना लिटरेचर क्लास है राइटिंग जोटा को तुम लिखिल इन द सेंस इट वुड बी लिटरेचर राइट अंडरस्टैंड शुभम जिते बड़े कौन सी जिनिस को आम लिखिले इन द सेंस एटा होची लिटरेचर बट व्हेन वी फॉलो इट बाय सर्टेन टाइप ऑफ रूल्स एटा कौन हो गला लैंग्वेज तेणु लिटरेचर लेख तापर लेख ड्रामा हाइफेन दे लेख ड्रामा DRAMA ड्रामा लेख इट इज ए टाइप ऑफ लिटरेचर हैंड स्पीड कर इट इज ए टाइप ऑफ लिटरेचर इट इज ए टाइप ऑफ लिटरेचर that is written to be performed that is written to be performed 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 in front of audience AUDIENCE बुझिपारे तो ड्रामा बाबद रे जोटा रिटेन लिटरेचर बाबद लिखाला कि स्टेज प्रोग्राम क्या करवा ऑडियंस मान लेख पोएट्री पोएट्री हाइफेन दब पोएट्री लेख द स्पॉन्टेनियस SPONTANEOUS आउ थे रिपीट करुच्ची SPONTANEOUS spontaneous overflow of powerful feelings comma it takes origin from emotion recollected in tranquility 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 तापर लेखा पिले स्टोरी ट्रांक्विलिटी माने कौन जिते बड़े आमर विशेष करी सैडनेस माइंड अच्छी दुखे आम अच्छे विषाद मन अच्छी सरकुल मुड्रे अच्छे से नीरव बसचे जोटा आमर साहित्यिक वर्ड रे कह विशेष करी आमर कौन कहल दुख समय कौन सी गोटे रही आम ट्राजिक मुड्रे अच्छे किंबा टिके लैडेन आम मुंडटा टिके भरपूर हो रही अलग कौन गोटे चिंताधारा अच्छे मुंड भर बसचे से आम कंपोज करुचु जो कविता है कि यहाँ थिला विलियम वॉटसन मोर व्यू तापर लेख पिले स्टोरी स्टोरी स्पॉन्टेनियस मीन्स कंटिन्यूअस
देख पिले तुम मन भितर एमती गोटे घटना कौन हम स्पोंटानियसली आसिक पहुँचब तुम धरा जाऊ जो मैंने भजन लिखुं सब जगन्नाथ पिक्चर थी आगू आसब हस्टेल पिला मैंने बर्तमान अच्छा मोबाइल खोलला बेलू माँ कथा बापा कथा भाई कथा मन पड़ो दैट इज नथिंग बट स्पोंटानियस गोटे थर गोटे जगह को तुम विजिट कर पड़े आस गोटे थर देखल जति किंतु तार रिअकरेन्सटा एगेन एंड एगेन बा स्पोंटानियसली तुमको कौन कर पिक्चराइज। नेक्स्ट स्टूडेंट स्टोरी शीघ्र लेख कम टाइम हो स्टोरी हाइफेन दियो लेख ए स्टोरी इज फिक्शनल वर्क ए स्टोरी इज फिक्शनल वर्क FICTIONAL ए स्टोरी इज फिक्शनल वर्क of prose a story is a fictional work of prose that is shorter in length that is shorter in length that is shorter in length than a novel that is shorter 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 in length than a novel तापर लेख नोवेल नोवेल पर हाइफेन दियो लेख ए नोवेल इज ए लॉन्ग स्टोरी 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 तापर लेख एसे एसे ESSAY एसे एति तो फुल स्टॉप आउ जे तुम कहबो सर आउ बड़े पाक पढ़ी सार आउ लेंथी करेबी अलग अलग डेफिनेशन देबी हैला तापर लेख पिले एसे एसे रे कोन डेफिनेशन एसे एसे रे डेफिनेशन तुम कोन कहबो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसे an essay is an expression an essay is an expression of a thoughts an essay is an expression of a thoughts which are arranged which are arranged which are arranged in an orderly manner in an orderly manner which are arranged in an orderly manner हेला कि पिले जति समय अच्छी एगुड़ाक हूँ आमर रिलेटिंग टू लिटरेचर उपर जदि हम के क्वेश्चन करे समस्त आम इंग्लिश पढ़ुचे ड्रामार डेफिनेशन टा जाना दरकार आहरी बहुत बढ़िया अच्छी आमर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी तुमको देवी जो मैंने एबेठार एक्सपेक्ट रखुच जे इंग्लिश उपरे टिके निजक निजे स्पॉन्टेनिएट कर निजक निजे पोटेंट कर बहुत किसी पढ़िया को पड़ो बहुत मटेरियल मो पाखे अच्छी जदि भी चाहब नहीं घरे पढ़ आ प्रत्येक टर्मिनोलॉजी क्या सहित जदि यूज न कर मो सहित कम्युनिकेट कर सैटरडे संडे टाइम मिले सर आप अच्छा कि मो सहित कम्युनिकेट कर आसे दैट विल एनहांस योर कैपेबिलिटी ना तो पिले सबुठी नोट दौरान पिला खोज मार्क रखुच्च कौन कर गाँव को जाऊँ किंतु तुम पोटेंशियल पाठ पढ़ी दिल्ली लेवल जाकर ग्रेजुएशन कि पीजी करके से वे टे पढ़ जहाँ टे शुणवे कि फास्ट क्लास कल प्रोनाउंसिएशन टे तुमको असुविधा हो हाबिचुएटेड ऑटोमेटिकली हो प्रत्येक गुड़ार जोटा मुझे आज डाकिली से नेक्स्ट क्लास डाकबी बोली माने ना ताकू भी दरकार पड़े डिफरेंट वे डाक पारि आज पढ़ देख कौन डाउट रही प्रत्येक जिनस कि मुझे जानी डाउट बाहर ये जो वार्डिंग गुड़ा देती तुमको टिके कॉम्प्लिकेटेड लगे जो पिला मैंने आधे किसी निजे एक्सट्रा आड कर समरी स्टांजा वाइज भल हो पार कि टॉपिकटा भल कि देख नेक्स्ट क्लास में मत रिमाइंड करदेव सर क्वेश्चन आंसर डिक्टेट कर टाइम हो गलानी है कि पिले रीड इट भल भाव पढ़ मु भावुँ तुम बहुत ऑब्जर्विंग हम एगुड़ाक जो देली पर्टिकुलरली प्रोज पोएट्री बाबद तुमको कहले ताकू कौन कर कंप्लीट कर यहाँ गोटे कॉमन सेंस लिटरेचर बाबद डेफिनेशन कहली से पढ़ी नब हाँ मु तुमको कही पिले तुम बेटरमेंट गोटे गोटे कोटेशन पढ़ी आसो बोली कहीं एवं सुधा कई तुम गोटे मॉनिटरशिप नौना मुझे तुम ये जो नॉर्मली रास्ता घाट पिला बोलूँ सेमती पाठ पढ़नी
नेक्स्ट क्लास रे तमे गोटे लेखा समस्त कोटेशन पढ़िबो कहार कोटेशन पढ़िबो आमर आसुची पर्टिकुलरली तमे जानिथिबो इंडिपेंडेंस डे तेणु फ्रीडम फाइटर हिसाब रे एम के गांधी समस्ते गोटे गोटे कोटेशन पढ़ी गोटे ला कोटेशन एम के गांधी सफिशिएंट कोटेशन अच्छी तेणु तुम गोटे भी कोटेशन आटलिस्ट मन रख आसब आम डिस्कसन करवा बहुत भल यहाँ गोटे रीडिंग करदेव समरी आउरी भी सर्टकट हो पार आउरी भी लेंथी हो पार सार कहते प्रेजेंटेशन कौन सी मुहूर्त प्रेजेंटेशन नहीं पारे